So once again, good morning everyone. Hope you all are doing well. Now, in last session, we went through some topics like separation of components, okay, and also we went through the topic that how can we get different gases from air, and now we will start about that some pure substances like element, okay. So we have already learned about elements in last session. Now we will see what is compounds. Okay, what are compounds? We will see. A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. Okay, so in mixture there is not a fixed proportion, but in compound there is a fixed proportion of different elements. Okay, so in last session I have given one activity to you. Okay, I have told you that you have to give me conclusion about that activity. Anyone can tell what you have concluded from that activity? If you know the answer, please raise your hand. In group 1, what we have taken? Mix and crush iron fillings and sulfur powder. Okay, so when you put magnet near the mixture, the iron filling will be attracted by the magnet. So easily you can separate iron fillings from that mixture, right? Now in second group, mix and crush iron fillings and sulfur powder. Heat this mixture strongly till red hot. That means they will mix into each other homogeneously. वो mix हो जाएंगे बेटा एक दूसरे में. Okay. Remove from flame and let the mixture cool. तो जो mixture बनेगा वो कैसा होगा? Homogeneous mixture. Then you cannot separate elements from these mixtures. Okay. Now group 1 and 2. Check for magnets in the material as we discussed that magnet आप नजदीक ले जाओगे group 1 में तो iron fillings attract हो जाएगी उससे, right? So bring a magnet near the material and check if the material is attracted towards the magnet or not. So yes, it will attract it. Okay. Then compare the texture and color of the material obtained by the group. Add carbon disulfide to one part of the material obtained. Stir well and filter. तो आपको एक पार्ट में क्या करना है? कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करना है, right? Add dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, that is H2SO4 or HCl, okay, to the other part of the material obtained. Now perform all above steps with both the elements, that is iron and sulfur separately. दोनों को separate कर जो है आपके पास separately. ये तो आपने mixture लिया था दोनों का, but separately also you have to perform this activity. Okay, so from this what you can obtain? So the gas obtained by group 1 is hydrogen. तो group 1 में जो आपको gas obtain होगा, बराबर, it is hydrogen, right? क्योंकि क्या है? मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, बराबर. मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करती है, it will liberate hydrogen gas. It is colorless, odorless and combustible. Combustible मतलब जो खुद जल सकता है, right? So hydrogen gas is combustible gas. Then it is not advised to do the combustion test for hydrogen in the class. तो क्लास में क्यों नहीं करना चाहिए हाइड्रोजन का टेस्ट? Because it is combustible gas, बराबर. It is if it is more amount of hydrogen, then fire लगने की possibility रहती है, right? So now group 2 is hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide group 2 में आपको मिलेगा, बराबर. It is a colorless gas with the smell of rotten eggs, बराबर. rotten eggs मतलब सड़े हुए अंडे जो होते हैं उसकी जो स्मेल होती है, ऐसी गंदी स्मेल आएगी उसमें से. सेकंड ग्रुप में जब आप हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड जब आपको मिलेगा तब, बराबर. So it is H2S gas, right? So you must have observed that the products obtained by both the groups show different properties. तो दोनों ग्रुप में आपको जो प्रोडक्ट मिलती है, एक में हाइड्रोजन मिलता है और एक में हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है. They both have different properties. Although you have taken in both the group same elements, right? आपने सेम एलिमेंट लिए थे ना, एक में सल्फर और आयरन का पाउडर लिया था और दूसरे में क्या किया था? उस पाउडर को आपने हीट किया था,
right? That means it will become homogeneous mixture, right? So अभी जब जो मिक्सअप हो गया एक दूसरे में, right, तो उसकी प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो गई. Okay, दो द स्टार्टिंग मटेरियल्स वर द सेम. स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया था? आयन और सल्फर, दोनों सेम थे, फिर भी आपको दोनों रिएक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट मिलती है. Group 1 has carried out the activity involving a physical change, whereas in case of Group 2 a chemical change, that is a chemical reaction has taken place. बराबर, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, बिल्कुल ध्यान देना इसमें. ग्रुप 1 में आपने क्या किया था? सिर्फ दो पाउडर मिक्सअप किए थे, राइट? सो इट इज ओनली फिजिकल चेंज, उसमें आपने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं की थी, ओनली फिजिकल चेंज इज दैट, राइट? जबकि ग्रुप 2 में हमने क्या किया था? वी हीट दिस बोथ पाउडर्स, ओके, तो दोनों को हिट किया तो होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, उसका एक दूसरे में मिक्सअप हो गए और आपको ऑल ओवर सेम मिक्सचर मिला, राइट? सो इट इज अ केमिकल चेंज. तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो बेसिक है, बराबर, जो मिक्स होके मिला है हमको जो कंपाउंड, उसकी प्रॉपर्टी, दैट मींस पाउडर ऑफ सल्फर एंड आयन, दोनों को मिक्स करके जो कंपाउंड मिला है, उसकी प्रॉपर्टी जो ग्रुप 1 में सेपरेट थे दोनों, बराबर, सल्फर का पाउडर और आयन का पाउडर, उसकी प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट है, राइट? सो द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस. The substances given are the elements iron and sulfur, right? तो ग्रुप 1 में जो मिक्सचर था उसमें दो सब्सटेंस थे, बराबर, तो उसमें कौन से दो एलिमेंट थे? आयरन एंड सल्फर. The properties of the mixture are the same as that of its constituent. तो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है उसके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी जैसी ही होती है. फॉर एग्जांपल, हमने आयरन और सल्फर का मिक्सचर लिया, फिजिकली मिक्स किया, उसको गर्म नहीं किया, हीट नहीं किया, ओनली मिक्सअप किया दोनों के पाउडर को, तो उस मिक्सचर की प्रॉपर्टी will be same like iron property as well as sulfur property. और इसलिए आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी लीव नहीं की थी, गर्म नहीं किया तब तक, बराबर. तो जब आप मैग्नेट ले जाते हो पास में, तो आयरन फीलिंग्स विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. तो देखो आयरन की प्रॉपर्टी ऐसी की ऐसी रही, राइट? द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज अ कंपाउंड. अभी ग्रुप 2 में जो आपका मटेरियल मिला है वो क्या है? कंपाउंड. ग्रुप 1 में क्या था? इट इज ओनली मिक्सचर, बराबर. नाउ ग्रुप 2 में इट विल बिकम कंपाउंड, क्योंकि आपने हीट कर दिया है, बराबर, तो ऑल ओवर उसकी प्रॉपर्टी सेम हो गई. ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड which has totally different properties compared to the combining element. तो अभी आपने जो दोनों लिए हैं सल्फर और आयन और पाउडर, उसको गर्म किया, बराबर, उसको हीट किया जब तक लाल बराबर हो गए तब तक, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर बन गया उसका, राइट? तो नाउ इट विल बिकम कंपाउंड and its property is totally different from iron and sulfur's property. That means now if you put magnet near them, the iron will be not attracted. Understood everyone? अभी उसकी प्रॉपर्टी वो नहीं रहेगी, ओके? द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट. मतलब हम जैसे कैसे होमोजेनियस मिक्सचर में थ्रू आउट ऑल ओवर द सॉल्यूशन सेम रहता था, बराबर, उसकी प्रपोर्शन, तो सेम हियर आल्सो द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड. तो कंपाउंड का कंपोजिशन ऑल ओवर द कंपाउंड सेम ही रहता है, थ्रू आउट सेम रहता है, राइट? which has totally different properties compared to the combining element. मतलब जो एलिमेंट से वो बना है उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है, राइट? The composition of a compound is the same throughout. We can also observe that the texture and the color of the compound are the same throughout. तो आपको जब वो होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा तो उसका टेक्सचर, उसका कलर पूरे ऑल ओवर कंपाउंड में सेम दिखेगा. ऐसा नहीं है कि एक जगह पर ग्रे दिखेगा तो एक जगह पर ब्लू दिखेगा, ऐसा नहीं होगा. ऑल ओवर कंपाउंड वो कलर और उसका टेक्सचर सेम दिखेगा. Thus we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical organizer. बराबर, तो आप देख सकते हैं, बराबर, तो कैसे उसका फिजिकल एंड केमिकल नेचर आप देख सकते हैं इस तरह से. Before this we will see the difference between mixtures and compounds. Okay, so mixtures and compounds, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, बराबर, डिफरेंस क्या है? तो मिक्सचर्स, elements or compounds just mix together to form a mixture and no new compound is formed. बराबर, अपने एलिमेंट्स या तो कंपाउंड को ओनली एक दूसरे में मिक्स किया है, बराबर, और कोई नया कंपाउंड उसमें से नहीं बन रहा है. फॉर एग्जांपल, वी हैव मिक्स्ड सल्फर पाउडर एंड आयरन पाउडर, जस्ट वी हैव मिक्स्ड इट, सो इट इज अ मिक्सचर, बराबर.
और उसमें से कोई नया कंपाउंड हमको नहीं मिल रहा है, while elements react to form new compound. तो जब हम वो दोनों पाउडर को हीट करते हैं, then after that we can get new compound, right? Second difference, a mixture has a variable composition. मतलब उसमें फॉर एग्जाम्पल आपने 5 ग्राम पाउडर ले लिया आयरन का और 6-7 ग्राम आपने फॉर एग्जाम्पल सल्फर का पाउडर ले लिया, दैट मीन्स उसके मिक्सचर में कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल रहता है, बराबर. द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, बराबर. जबकि इसमें क्या है, जो भी नए सब्सटेंस है उसका कंपोजिशन एकदम फिक्स रहता है, राइट. A mixture shows the properties of the constituent substances. तो मिक्सचर में क्या है, जितने भी आपने उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट लिए हैं, फॉर एग्जांपल आयरन और सल्फर का पाउडर लिया, तो उन दोनों की प्रॉपर्टी अपनी अपनी रहती है, बराबर. उन दोनों की अपनी अपनी ओन प्रॉपर्टीज रहती है. वो मिक्सचर वो दोनों कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी दिखाता है. जबकि कंपाउंड्स में क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी. जबकि उसको हीट किया और जो नया कंपाउंड मिला उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी. ओके, देन नेक्स्ट वन, द constituents can be separated fairly easily by physical methods. तो easily by physical method you can separate the compound that constituents of a mixture. For example, iron और सल्फर का मिक्सचर है तो easily you can separate iron fillings by magnet. Okay, जबकि the constituents can be separated only by chemical or electrochemical reactions. तो यहाँ पर आप physically दोनों constituents को अलग नहीं कर सकते हो. For to separate them you have to use some chemical or electrochemical reactions. Understood everyone? दोनों का difference पता चल गया. It is most important. You have to write this difference, okay, of mixtures and compounds in your science notebook, beta. Okay, please write down it. Now the final chart we will see. So here it is very easy chart. जब just आप इस chart पे ध्यान दो. अगर इस chart को में आपको कोई problem नहीं है बेटा, तो easily you can separate pure substance and mixtures, then elements and compounds, homogeneous and heterogeneous, right? So first of all, metal can be of 3 states, बराबर, solid, liquid and gas. अब 3 स्टेट में जो मैटर होती है हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. इट इज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स. या तो प्योर सब्सटेंस होते हैं, बराबर, या तो मिक्सचर होता है. तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है बेटा, तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं, बराबर. प्योर सब्सटेंस में तो एलिमेंट्स कैनॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस. तो एलिमेंट तो सबसे बेसिक सब्सटेंस है, तो अब उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं सिंपल सब्सटेंस में. दैट इज इट इज अ बेसिक सब्सटेंस, बराबर. एंड फॉर एग्जांपल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, दे आर एलिमेंट्स. नाउ कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स आर आल्सो प्योर सब्सटेंसेस and have fixed composition, can be broken down into elements by chemical or electrochemical reactions, बराबर. तो कंपाउंड्स में फिक्स कंपोजिशन रहता है किसी भी एलिमेंट्स का और उसको हम ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बराबर. बट कौन सी प्रोसेस से, तो केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से, राइट. अभी उसके फॉर एग्जांपल से वाटर, देन मीथेन, ओके, शुगर एंड सॉल्ट, बराबर. दे आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड. अभी मैटर में एक हो गया कंप्लीट प्योर सब्सटेंस. अभी हम देखेंगे मिक्सचर्स. तो मिक्सचर्स में क्या कहा होता है, बराबर. तो इट इज अ होमोजेनियस, दैट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरा कंपोजिशन सेम रहता है. हेट्रोजेनियस तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बराबर. नाउ होमोजेनियस में क्या रहता है, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर. अगर आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. सॉल्ट इन वाटर, इट इज आल्सो होमोजेनियस. सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, बराबर. कार्बन डाइसल्फाइड में जो सल्फर है वो भी होमोजेनियस है. एंड वाटर इन अल्कोहल, इट इज आल्सो होमोजेनियस मिक्सचर, ओके. अभी हेट्रोजेनियस क्या है, तो फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट, बराबर, दोनों अलग ही है, इट इज हेट्रोजेनियस. And sugar and salt, they are also heterogeneous. And water in oil, they are not mixed up with each other, so it is also heterogeneous mixture. बोलो यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है? Yes, Pari, you have any problem, beta? You can write in chat box. Pari, Pari is there, beta? Yes, write in chat box, beta, if you have any problem, Pari.
Okay, fine. So up till here, everyone, okay? Any problem? Second chapter में कोई भी problem है बेटा आपको? Okay, fine, good. So today we will start exercise also. So I hope you don't have any problem in any theoretical that matter or anything. Okay, very good. Yes, Ayman, बोलो क्या प्रॉब्लम है? Ayman, हाँ? Okay. So yes, Khushi, you have any problem, beta? Khushi? Okay, fine. So all of you, now we will do the exercise and we have completed second chapter. Okay, you please go through once again chapter number 2 and read it again. You just try to find out all the answers. Okay, so God bless you everyone and have a nice day.